ओके, राइट। ये वीडियो किस बारे में? वेल, सो आज मेरा वर्कशॉप था। आई डोंट नो, इट्स लाइक वर्कशॉप और जो भी चीज़ थी वो। सो इट वाज अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड या लाइक द फर्स्ट वर्कशॉप है। कल भी होने वाला है एक। एंड बी टेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने लिया था। सो मृगांक, क्रिस्टोफर एंड हर्षिता। आई मीन देयर वर सम लाइक बहुत सारे अलग चीज़ें हुई थी, बट या द मेन थिंग वॉज कि वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था विच वॉज फिगर आउट एन algorithm or like a function which will give you the LCM of array A, right? So that was not exactly the thing. It was कि figure out the LCM and then reduce it modulo 10 power 9 plus 7. But basically the question is like this, that we want to get the LCM of some array and then we want to reduce that modulo 10 power 9 plus 7. And कुछ और restrictions वगैरह थे, that like the elements are less than or equal to n, which is the number of elements of the array. I don't even remember that because वो मैं browser पे ढूंढ नहीं पाया. But yeah, that was the question basically. So here what I'm doing is I'm putting the restriction कि जो elements है those are bounded. So like those are bounded by n, which is the number of elements itself. Right. So like what would be a very good algorithm to do this? That's the question basically. And we also had the condition कि तुम जो भी algorithm design करोगे उसकी complexity that should be of this order. Natural, not natural log. There's no natural log in computer science. Okay, so n log of n, where log is like log base some integer. Okay, so like log base 2 or log base 10 or whatever. Usually log base 2 यूज होता है. Okay, so this should be क्या बोलते हैं अपनी complexity for our algorithm. And I was just thinking कि क्या कर सकते हैं. There was this one idea that I had जहाँ पे तुम्हें what you would do is like तुम्हारा उसमें list है numbers की. You would take the first number, तुम इसका GCD लोगे इसके साथ में इसके साथ में इसके साथ में करते जाओ. And these GCDs you will like you will divide these numbers by those GCDs, right? So that only the remaining factors are remaining. Okay, and then you will copy these down in another list or just modify the list itself. Right, और ये जो number है you will like put this in some other list, or instead of list we'll just say कि एक number रहेगा which is like acting as a counter kind of thing. So I just say like k equal to 1, or this is a sub 0. So then you will just do k equal to k times a sub 0. अब ये programmatically होगा. I know mathematically this doesn't make sense, but this is what's gonna happen. So like इसका और इसका GCD तो तुमने like उड़ा दिया इसमें से. इसका GCD मतलब वो GCD इसमें ऑलरेडी था तो यहाँ पे आ गया. इसके एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी आ गए तो इसके बचे हुए एक्स्ट्रा फैक्टर्स यू विल पुट दैट इन द नेक्स्ट इटरेशन जब तुम इसको k में डाल दोगे, राइट? सो इवेंचुअली यू विल जस्ट गेट द LCM. सो आई वाज थिंकिंग ओके दिस लुक्स प्रीटी फास्ट, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली में क्या होगी? सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर यूक्लिडियन डिवीजन, मतलब दैट एल्गोरिथम फॉर लाइक GCD निकाल के लिए, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ n. So our worst case scenario is कि यहाँ पे ये n आ गया. So yeah, it's like natural log of n would be the thing, I guess. And n is a prime one. That would be our worst case scenario actually. Yeah. So that would be the thing कि तुम्हारे से natural log of n आ जाएगी for like one single step. So तुम कितने steps कर रहे हो? You are doing like n steps. Yeah. So you are doing n steps. So natural log of n over there. फिर नेक्स्ट टाइम अब क्योंकि तुमने इन सबको लाइक रिड्यूस कर दिया है, वी आर लाइक थिंकिंग कि इन दोनों का GCD इट शुड बी लाइक लेस देन दिस एटलीस्ट, राइट? और इसमें से जो भी मिनिमम नंबर होगा इट्स लाइक लेस देन दैट. सो द वर्स्ट के सिनेरियो इज कि लाइक ऑल ऑफ दीज आर प्राइम्स एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी बिग और समथिंग लाइक दैट. या बट देन ओके देयर इज द रिस्ट्रिक्शन कि दिस मतलब ओके यू हैव लाइक n ऑफ दीज गाइस. सो लाइक इवेंचुअली यहाँ पे कहना कुछ ना कुछ छोटा आने वाला है. सो देन एक्चुअली इट्स नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम, छोटा वाला ले लोगे विच वुड मीन कि उसका GCD इससे छोटा होना चाहिए. तो देन यहाँ पे जो तुमने GCD बढ़ा दिए, सो या देयर इज़ अ बिट ऑफ प्रॉब्लमेटिक थिंग कि इससे इफेक्ट कुछ नहीं होगा इफ़ तुमने जो उड़ाया है दैट थिंग इज़ 1.
if the GCD is 1, and that would happen if all of these are like prime numbers. That's kind of the worst case scenario. अगर ऐसा हो रहा है, then in the next step as well तुम्हें exactly n natural log of n करना पड़ेगा, n minus 1 because तुमने एक उड़ा दिया, so n minus 1 natural log of n minus 1 तुम्हें करना पड़ेगा and so on, right? And now you see कि ये इतना बुरा क्यों है, because this is like something slightly less than n square natural log of n, right? उतने तुम्हें calculations करने पड़े, not a good thing. We instead want like n natural log of n, not this. So on the surface it looks like अरे यार एक step में तुमने कितना सारा इसमें कम कर दिया, but नहीं, actual में this is not so good. Okay, so ठीक है, this is like not a good algorithm. What would be a good algorithm? So the simplest algorithm is actually the best algorithm, which is like तुम पहले दो इसका LCM निकालते हो, replace these two with their LCM, and then like जो बाकी लिस्ट है just let it be, फिर इन दोनों का LCM निकालते हो, replace these two by इनका LCM, बाकी लिस्ट को just let it be, right? उसको change मत करो. So ये लिस्ट like this starts evolving, इसका एक एक एलिमेंट कम हो रहा है, and after n iterations this will just become a single element, फिर वो single element को ये just return, right? That's what this function does. ये a0 को रिटर्न करता है when the length of our array becomes 1, and yeah, जब तक 1 नहीं है it just like pops the first element, okay the last element. So it's like ये और ये का LCM तुम यहाँ पे घुसा रहे हो, but actually यहाँ पे नहीं, यहाँ पे घुसा रहे हो because a negative 1 हो रहा है, but yeah you get the thing, right? So x equal to a dot pop, so like ये okay actually ये वाला भी नहीं है, this is like this one, but whatever. So उसको तुम पॉप करते हो, then y is this one, फिर तुम x times y upon GCD of x comma y, which is the LCM of x time of x and y, just replace that with, yeah, so like ये position तुम replace कर देते हो with the LCM, right? So one element कम होते होते हैं, इसको like आंसर मिल जाएगा, fine. So इसकी complexity कितनी है? तो मैं n iterations हो रहा है, so of course तुम्हें ये n समझ गया, but what about this thing? ये कहाँ से आ रहा है? So the Euclidean algorithm is like log base 2, yeah, log base 2 of n or log of n or whatever, कि कोई भी log चलेगा. That's the complexity of Euclid's division. Now you might be thinking कि कैसे यार Euclid's का division log n, how do I know? So that's actually what this video is about. मैं तुम्हें explain करने वाला हूँ कि Euclid's division log n वाला complexity क्यों रख रहा है. So like idea मुझे कैसे आया इस बारे में, like funny story, जब मेरा हो गया था that session, our workshop जब वो हो गई थी, there were refreshments outside and they were like for some ceremony, some inauguration ceremony, and हमें पता नहीं था, so we all just went there, हमने खाया, and then वहाँ पे जो like लोग खड़े थे, they were like कि नहीं अंदर घुसो, go in the hall and eat, and we were so naive कि like we literally went, and वहाँ पे हम फंस गए. So I was stuck there for a whole hour, I guess even more than that. I didn't realize कितने टाइम पे जा रहा है. It was about some ceremony. Okay, the ceremony was like about inauguration of some chair. I don't remember any of that because throughout that I was thinking कि what kind of algorithm should I use, like or why is the complexity n log n अपने को वो क्यों चाहिए, and what kind of algorithm would have n log n complexity, right? कि ये चीज़ ही क्यों, why this thing. Like basically I was backtracking कि अगर ये complexity है then what could have the algorithm been. N is like for n iterations, log n is like कि n steps में तुम्हें like capital N steps में suppose तुम्हारा ये जो small n है this like becomes 1 or something, so it's like ऐसा कुछ हो रहा है, n half power n equal to 1, something like this is happening, then n use होता है, right? So like for example binary search में क्या होगा, you just like reduce by half तुम्हारी जो number of, मतलब तुम्हारी जो लिस्ट है तुम उसको हाफ करते जा रहे हो. सो सिमिलरली यहाँ पे कुछ तभी हो रहा होगा, राइट? दैट्स प्रॉब्ली हाउ यूर गेटिंग दिस. सो जब मैं इस कंक्लूजन पे आ गया दैट आई गेस दैट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज लॉग एंड कॉम्प्लेक्सिटी वाला, बिकॉज दैट वाज द वन आई लाइक, या जो मैं सोच पा रहा था दैट वाज द ओनली थिंग. सो देन आई थॉट ओके it does look like Euclid's algorithm में half हो रहे numbers, because like you start out with two numbers which I am representing as bars. जब तुम इसको divide करते हो then this thing like becomes somewhere over here, right? It's less than this.
Yeah, so like what would happen if to next divide karte ho, it's gonna become like less, so it's like it's getting less and less and less. So is this, you know, decreasing exponential behavior, is it actually like that? So in a single iteration, not exactly, because in a single iteration तुम्हारा जो remainder है that could be anywhere from here all the way till here, till this thing -1, right? So it's not getting half, but in two iterations, so you got this remainder. अब next time क्या होगा, your remainder will be like 1 अगर ये n-1 है तो, right? और if this is the thing, then तुम्हारा ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है that will be your remainder. So अगर ये जो चीज़ है it's bigger than half of this thing, then जो बचा हुआ पोर्शन है that will be your remainder, right? Which is less than half of this thing. So in the second iteration छोटे नंबर का हाफ, उससे कम कोई तो भी नंबर रिमाइंडर अपने को मिलने वाला है, राइट? सो एवरी टू इटरेशंस अपने को लाइक सबसे छोटा नंबर रहेगा दैट गेट्स like halved or less than halved, right? Yeah, like इसका फॉर्मल प्रूफ कैसा रहेगा दैट रिमाइंडर जो है, लेट्स जस्ट से कि द रिमाइंडर इज रिप्रेजेंटेड बाय, यू नो, इसका जो टॉप है ये छोटे, इसका द टॉप इज रिप्रेजेंटेड द रिमाइंडर. सो अगर ये लेस देन हाफ है देन बिकॉज सेकेंड डिवीजन में जो रिमाइंडर आने वाला है दैट शुड बी लेस देन दिस गाय इटसेल्फ, बिकॉज नाउ दिस इज द डिवाइजर. सो सेकेंड इसका रिमाइंडर विल ऑफ कोर्स बी लेस देन हाफ ऑफ दिस थिंग, राइट? और अगर ये बड़ा है हाफ से then this itself is the remainder because ये बड़ा है half से, right? So like when you try to divide this whole thing by this, delete ये वाली line because it's confusing. So when you're trying to divide this whole thing by this, because ये इसके half से बड़ा है, of course this will be your remainder, और वो we already know is less than half of this complete thing. So yeah, in both cases what you get is like half in two iterations. So like n iterations में you will just get 1/2 to the power of n/2 का फैक्टर आ जाएगा. एंड लेट्स से तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा सबसे जो छोटा नंबर है दैट इज ऑल्सो लाइक वेरी वर्स्ट केस वाला नंबर, सो इट्स समवेयर अराउंड n और समथिंग. आई रियली डोंट रिमेंबर कि वो क्या था, व्हाट वाज यू नो the restriction on it, but yeah, let's just for the time being say कि it's n. Actually, you know what, remove that. So n के जगह पे let's just say that the restriction is like these should be m at max. So now this will be like n log m, right? So अगर ये m है this whole thing, so like m is our worst case scenario, m and then 1/2 to the power of number of steps taken upon 2, right? Because every 2 step में half हो रहा है. This will eventually become 1 or 0 or something like that. So that means like okay, like some constant, छोटा वाला constant. So it's like वो छोटा वाला constant times 2 power n/2 is equal to m. So it's like our n is just 2 log base 2 of m/c, which उसका complexity is just log base something m, right? And you are taking like n iterations to do this because तुम फर्स्ट दो जो तुम्हारे एलिमेंट्स रहेंगे उनका एलसीएम निकाल के उसमें डाल दो. लाइक एवरी इटरेशन तुम्हारा एक एलिमेंट कम हो रहा है, सो ऑफ कोर्स इट्स जस्ट n इटरेशंस ऑफ दीज GCD वाली चीज़ें गोइंग ऑन. सो या इट्स जस्ट n log m, दैट्स द कॉम्प्लेक्सिटी. सो हाँ, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. सो मैंने ये दोनों फंक्शंस कोड कर दिए. You have LCM of array which uses the GCD function, and because you know, just because I want everything to be like original, मैंने GCD function भी code किया है. But yeah, like just get it from math वाली module or something, whatever. And now we just print the LCM of this array. Let's go. Why is this a float? This should not be a float. 24.0. I really have no idea कि float कैसे क्यों काम कर रहा है. Oh, because I'm like, oh, this is the problem. So इसको int में convert करो यार. Okay. Fine. So 6, 8, 12 का LCM is 24. That's what it returns. Okay then. We'll see you guys in the next video.